A touch of magic to every screen. Aditi, please join us on stage. And let's hear it for Dia Mirza, an inspiring force in film and activism, truly unparalleled in her radiance and dedication. और भी कई सारे नाम आने वाले. Chief Growth Officer of ZTV, Shri Ashish Sehgal ji. Chief Business Officer of Z5, Manish Kalra ji. Well, thank you everyone for being here. I extend my gratitude to all the esteemed dignitaries for gracing us with your presence. And जोरदार तालियां एक बार सबके लिए हो जाए on stage. Come on everybody. Round of applause for all esteemed dignitaries for gracing us with their presence and for starting this with the auspicious lamp lighting. Thank you so much everybody. लेकिन सबसे पहले जो भाग रहे हैं उनको ही मैं कहूं कि Dia and Aditi, I would like to request both of you to stay back on stage. And also Phalke जी मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर रहें to honor these wonderfully talented women. What do I want from you? I just want to honor you, as always. लेकिन उसके लिए पुसालकर जी आपको भी यहाँ स्टेज पर होना था. अनिल जी आप भी प्लीज आ जाए स्टेज पर. हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया. I think you will really like these. Can you please? Thank you Anil ji, thank you Phalke ji for doing the honors. Ladies and gentlemen, it's now time to unveil the exclusive invitation of DPIFF Awards. आज हमारे साथ हैं none other than Shri Chandrasekhar Pusalkar ji, जो कि legendary Dadasaheb Phalke ji के grandson हैं. His presence adds a touch of heritage and tradition to our gathering, connecting us directly to the roots of Indian cinema. Pusalkar ji के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. So please join us on stage. May I also invite Mrs. Ruchita Bansal and Mr. Anupam Bansal, founders of Izhar, the illustrious invitation curator of DPIFF 2024. ऐसा लगता है कि इनविटेशन बनाने वाले खुद ही उनको इनवाइट नहीं मिला यहाँ आने का. ऐसा हो सकता है. अगर ऐसा है, क्या ऐसा ही है? क्या लेट हैं? कोई बात नहीं. कभी-कभी आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि हमने बहुत टाइम पे शुरू किया है, तो कभी-कभी ये हो जाता है. Well, since they are not here, may I please now request Aditi and Pusalkar ji to unveil the exclusive invite of DPIFF. Re
Anil Mishra ji, MD of BPIFF and delegate from Food Corporation of India, Ministry of Consumer Affairs. Shri Sameer Ratanjankar ji, Senior Vice President, JioMart. Shri Manish Kalra, Chief Business Officer, Z5. श्री आशीष 30 साल से ऊपर हो गए, एक बहुत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट रोल आपने प्ले किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में. हाउ डू यू सी द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड उसका दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा है? थैंक यू. सबसे पहले हमारे मीडिया साथी और हमारी मीडिया की जो बहन है, सबको कोटि कोटि नमन, अभिनंदन. हमारे बीच जीटीवी के हमारे मनीष जी और आशीष जी को कोटि कोटि नमन, अभिनंदन. दिया मैडम जी, हमारे सुपरस्टार अदिति मैडम, सबको कोटि कोटि नमन और अभिनंदन है. भारतीय सिनेमा में मैं 1988 में अपनी एक छोटी सी सदस्य में शुरुआत किया था, छोटी सदस्य के रूप में. अभी 35 ईयर मुझे सिनेमा में कार्य करते हुए हो गया, और जो मैं अपनी आज बात रखूंगा और सच्चे दिल से रखूंगा. जो हमारा एक्सपीरियंस है 35 ईयर का, वही बात करूंगा. सिनेमा जो है माँ गंगा की तरह पवित्र है, माँ तुलसी की तरह पवित्र है. जैसे हम गंगा का जल अपने घरों में रखते हैं और कभी दूषित नहीं होता है, वैसे ही सिनेमा, मदर इंडिया, पाकीजा, ऐसी फिल्में हैं जो हमें याद करते हैं और उसे हमें सीखते हैं. सिनेमा हमारा समाज का आईना है. सिनेमा जैसे योग करते हैं, हम योगा करते हैं, हम लोग स्वस्थ रहते हैं. हम सिनेमा जब देखते हैं 2 घंटा 3 घंटा एकाग्र अपनी माइंड को लेके और अपने आप को कुछ सीखते हैं, तो सिनेमा हमारे देश के लिए एक जड़ी बूटी की तरह है. सिनेमा को हमको सम्मान की तरह देखना चाहिए. हम सिनेमा परिवार वाले, हमारे पास दिल है, दिमाग नहीं है. छोटे छोटे लोग जिसको सिनेमा नहीं आता है, कभी कभी कड़ी निंदा कर देते हैं. उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अच्छे काम करिए, एनजीओ में काम करिए, समाज सेवा करिए. सिनेमा जैसा है वैसा चल रहा है, चलते रहेगा. जैसे गंगा नदी चल रही है वैसे चलते रहेगी. सिनेमा हमारा देश ही नहीं, पूरे ग्लोबल में भारतीय सिनेमा मेरा प्रथम है और सबसे सुंदर है. सिनेमा मेरा कला, संस्कृति, कल्चर, टूरिज्म सब मिल के मिश्रण से एक मेरा सिनेमा भारतीय संस्कृति का सबसे सर्वोपरि है. मैं अपनी अंतिम शब्दों के साथ टीम डीपीआईएफ को और मीडिया साथी को कोटि कोटि नमन, अभिनंदन करता हूँ. थैंक यू. धन्यवाद अनिल जी. दिया, आप पहले भी दिलों में रहते थे, अभी भी दिलों में रहते हैं. All these years that have gone by in your career, from all the way from रहना है तेरे दिल में to now a very sensitive portrayal in Dhak Dhak, you have done so many movies, you have told so many stories. बहुत लोगों के दिलों को छुआ है उन कहानियों ने. Personally for you, out of all your projects, which projects have been the most special to you? 23 years. Wow. रहना है तेरे दिल में released in 2001 and धक धक released in 2023. तो जब धक धक आई थी पिछले साल, मैंने ये बात कही थी कि 150 साल लग गए हमारे देश को ऐसी कहानी लिखने के लिए जो 4 औरतों की कहानी हो, जो 4 अलग एज ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं, जो एक साथ एक यात्रा पर जाती हैं. और वो जो मंजिल, वो जो मुकाम पे पहुंचती है, उम्मीद यही है कि हमारे देश की हर औरत उस मुकाम तक पहुंचे. डर से आज़ादी और इस बात की समझ कि आपको कुछ भी हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता सिवाय आप अपने आप को. सो I feel in many ways that my journey as an artist over the last 23 years has been very similar to the journey of the 4 women in Dhak Dhak. Because when I started out, my presence on set used to be like this, like very, very underrepresented by women, because there was a vast majority of the set was
populated by men. Thankfully today there are many more women on a Yeah. film set. और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि हमारी फिल्में हमारी सभ्यता हमारे समाज का आईना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे समाज की कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए हमारे कहानियों की बहुत ज़रूरत है. सो आई फील that in many ways my journey in the film industry has helped me understand gender much better than perhaps any other job would have helped me understand. And the films that I'm most proud of are my first and my last. Because I feel in so many ways these two films have really covered the gap that needed to be covered and represent everything that I hope that we can continue to achieve as storytellers and filmmakers. क्या बात है, क्या बात है. Diya, do you also feel that शायद बहुत सारा एक positive step आगे बढ़े हैं वो OTT के advent के साथ भी हुआ है, because in the last couple of years आपने भी the traditional film medium and also OTT, you have tried both of them. Do you feel that that has also given कुछ एक तरह की आज़ादी है in choosing better roles, in creating better characters, in having better stories? बिल्कुल, I feel like OTT has democratized the system of storytelling. एक तो opportunities बहुत बढ़ गए हैं. बहुत सारे जो स्टोरी टेलर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, एडिटर्स हो, सिनेमेटोग्राफर्स हो, एक्टर्स हो, सबको मौका मिल रहा है सामने आने का, अपनी कला दिखाने का. क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्में बनती है तो कम फिल्में बनती है, चुनिंदा फिल्में बनती है, बिकॉज देयर टू मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इन माइंड एंड टू मेनी स्ट्रेसेस एंड प्रेशर्स. बट जब आप फिल्म मतलब कोई भी कंटेंट, चाहे वो शोज़ हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरीज़ हो, बहुत सारा जो सिस्टम खुल चुका है एंड इट्स रियली गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ. जब काफिर मेरे ज़िंदगी में आई ZEE5 पर ये शो उपलब्ध हो सकती है, पीपल कैन वॉच इट ऑन ZEE5. इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ. It's one of the most nuanced characters that I've had the opportunity to play. It's a 6-part story and it's so beautifully told. और जब मैंने ये कहानी में मतलब मैंने जब इस शो में परफॉर्म किया था, इस कहानी का हिस्सा जब मैं बनी थी, तो मैंने यही कहा था कि मैं घर पर बैठी थी, मुझे काम नहीं मिल रहा था, और मैं उन हज़ारों आर्टिस्ट्स का एक हिस्सा हूँ जो रुके हुए थे कुछ अच्छा, कुछ मीनिंगफुल करने के लिए. एंड आई फील OTT रियली चेंज द गेम फॉर ऑल ऑफ अस, for those who weren't getting opportunities and for those who were genuinely talented that needed the opportunity to come out and shine, and especially for women. Shefali Shah, Huma Qureshi, Tilottama Shom. I mean, the list is endless of incredible women in their 30s, their 40s, their 50s, their 60s who are now shining because of OTT. हमारी धक-धक भी OTT पर the kind of noise it's created and the kind of consumer base it's found. I mean, it was tracking at #1 in India for weeks. Wow. Despite just being soft launched. So there was no advertising, there was no marketing spend. It was just released on Netflix. And globally it was at #3 for weeks, despite again not getting any marketing. So that's actually evidence of the fact that the audience will decide. And OTT has democratized the system of storytelling because the audience truly decides. And I think the other aspect to this answer is that I hope we continue to remain free. And we continue to tell stories with the freedom that OTT has offered us. And we don't hold back from telling stories the way they need to be told. उम्मीद है कि ऐसा ही होता रहेगा. जोरदार तालियां हो जाए. बहुत ही बेहतरीन जवाब था ये. एंड इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैंने शायद नहीं सोची थी, लेकिन वो भी अभी बहुत क्लियर कट हो गई हैं. सो इट इज़ अ वंडरफुल मीडियम. उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कहानियाँ बाहर जाती हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. मयंक जी, आप मेरे हमनाम हैं, क्योंकि
मेरा वैसे फर्स्ट नाम तो मयांक है, लेकिन कई लोग मुझे मयंक बोलते हैं और बहुत आसान हो जाता है। कई बार जब मुझे ट्रैफिक पुलिस भी पकड़ती है तो मैं उनको बस कहता हूँ कि मेरा नाम मयंक है। तो कहीं आपको अगर किसी ने रोक लिया तो आप मेरा नाम ले सकते हैं। जरूर। मयंक जी, सिनेपोलिस हैज ऑलवेज बीन अ होम फॉर ऑल द मूवी लवर्स। जिन्हें मूवीज देखना पसंद है ऑन द बिग स्क्रीन, सिनेपोलिस जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। देयर आर मल्टीपल चेन्स आउट देयर। तो ऐसी आपके हिसाब से क्या चीज़ है जो सिनेपोलिस को बाकी सिनेमा चेन्स से डिफरेंशिएट करता है? Sure. So first of all, पहले namaste and good afternoon to everyone. And thank you to Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards for associating with Cinepolis. So there are some common, unique experience and uncommon. So I'll talk about Cinepolis. It's a global theater chain, as most of us know. We are in 19 countries, 7,000 screens. Cinepolis entered India in 2009. And currently we are at 460 screens in India. So common experience which everyone offers right now currently is your recliners, VIP seats, formats, IMAX, 4DX, kids format, Atmos. Couple of unique experience which Cinepolis has learned from their best practices from international country and offer across the globe, not only India. One is Real D 3D. So that's not has happened with anyone else in India. So एक 3D technology है जो कि काफ़ी better है. When we say better in the sense 2K screens are more clear in terms of viewing. That's how Real D 3D is more real in terms of 3D experience. Secondly, a very unique thing is which we do not promote, but it's there when someone has come to watch the film and by mistake they have come one day before or one day after, we do change the tickets for the movies they want to watch. Or suddenly, or even if it's houseful. We offer then second show or third, of course. Sweet. That's. But उससे ज़्यादा ये तो बहुत normal है actually. कोई और भी कर सकता है शायद. But other very interesting thing which I saw at Cinepolis, कोई movie देखने गया है और उसको movie पसंद नहीं आ रही हो, तो बाहर जाके बोलता है मैनेजर को कि मैं दूसरी पिक्चर देख सकता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है. अच्छा. Then manager is supposed to change. But we do not promote this. I'm sorry. So. क्योंकि एक ही दिन में जो फिल्म लवर्स है बहुत सारी पिक्चरें देख लेंगे फिर. थोड़ी करते करते सैंपल कर लेंगे. रिक्लाइनर में बैठ और पॉपकॉर्न खाने के लिए. See, just like watching movie on the TV. You can switch channels. On demand, keep switching. But ये आपकी खासियत हुई Cinepolis chain की. Do you have any plans for expansion into new markets and areas? Yes, so fortunately we were the first one to enter Bihar 10 years back when we were in Bombay. All the chains were in a double mind whether to go state of Bihar or not, and that was a very good location. It's one of the highest profitable, plus we also realized Bihar has highest watching crowd. Achha. So average weekly admit or per screen per week footfall of cinemas in Bihar is more than 3,000. Oh, wow. Versus if you ask me, benchmark of North India is 2,500, 22 to 2,500. So people watching in Bihar is 3,000, which is kind of equivalent to South. As we know, South. Yeah, they're very regular. Very. Their movie watching habits are much higher than us in North. Wow. So like that, Cinepolis is entering in not only Bihar, but all the BC centers. A centers have been now pretty developed. Bombay, Delhi, Bangalore, Pune. Everywhere there is a multiplex mall. Now I believe when we attend the IRF, which is a retail forum, we see 400, 500 malls coming in all the upcoming cities. That's very cool. मयंक जी, मुझे याद है, मैं भी झारखंड से हूँ जो बिहार हुआ करता था, और मुझे याद है कि वहाँ पर हमारे जो सिनेमा हॉल्स थे वो उस ज़माने के सिनेमा हॉल्स थे जिसमें आप फैमिली के साथ नहीं जा पाते थे बिकॉज इट वाज ईदर नॉट क्लीन इनफ, नॉट सेफ इनफ. तो दिस इज एक्चुअली, आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप ऐसे सेक्टर्स में भी एंटर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, सो दैट एवरीबडी कैन हैव अ वेरी गुड सिनेमा एक्सपीरियंस. जी, आप जानते होंगे रांची और धनबाद कितना डेवलप्ड हो गया है जी, और कितने सारे सिनेमा हॉल्स आ गए, नॉट ओनली सिनेपोलिस बट एंड एवरीवन इज मेंटेनिंग वेरी वेल. थैंक यू फॉर दैट. समीर जी, जियो मार्ट तो भाई बन गया है अब